अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अहादीस की वीडियोस के साथ साथ दूसरी इस्लामिक सीरीज़ की वीडियोस भी मिल सकें और जो मैं अल्लामा इकबाल की पोइट्री और दूसरी एडिट्स करता हूं वो भी आपको मिल सकें। तो जैसा कि हम सहीह बुखारी के चैप्टर नंबर 13 जो कि ईदीन के मसाइल के बयान में है उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं, द बुक ऑफ द टू ईद्स। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है हदीस नंबर 948 से। हमसे अबू उलेमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुएब ने ज़ोहरा से खबर दी। उन्होंने कहा कि मुझे सालम बिन अब्दुल्ला ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मोटे रेशमी कपड़े का चगा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जो बाज़ार में बिक रहा था। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आप इसे ख़रीद लीजिए और ईद और वफ़दों की पजीराई के लिए इसे पहनकर ज़ीनत फरमाया कीजिए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा उम्र रही। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके पास एक रेशमी चोगा तोहफे में भेजा, यानी कि उसी जैसा एक चोगा जो है एक और कपड़ा उनकी तरफ भेजा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, आपने तो ये फरमाया कि इसको वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, फिर आपने ये मेरे पास क्यों भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा बल्कि इसलिए कि तुम इसे बेचकर इसकी कीमत अपने काम में लाओ, यानी कि इसको बेचकर अपने काम में इसकी कीमत को लगा सकते हो। नरेटेड अब्दुल्ला बिन उमर bought a silk cloak from the market, took it to the Prophet and said, O Allah's apostle, take it and adorn yourself with it during the Eid and when the delegations visit you. Allah's apostle, peace be upon him, replied, this dress is for those who have no share in the hereafter. After a long period, Allah's apostle, peace be upon him, sent to Umar a cloak of silk brocade. Umar came to Allah's apostle, peace be upon him, with the cloak and said, O Allah's apostle, you said that this dress was for those who had no share in the hereafter. Yet you have sent me this cloak. Allah's apostle said to him, sell it and fulfill your needs by it. So this is Hadith number 948 and the first Hadith of this chapter number 13. इसके बाद हम अगली हदीस की जानिब पढ़ते हैं। तो हदीस नंबर 949 है कि हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्ला बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे उमर बिन हारिस ने खबर दी कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असदी ने उनसे बयान किया, उनसे उर्वा ने, उनसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, उन्होंने बताया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। इस वक्त मेरे पास इंसार की दो लड़कियां जंगे बास के किस्सों की नज़में पढ़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और मुझे डांटा और फरमाया कि ये शैतानी बाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि जाने दो, खामोश रहो। फिर जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे काम में लग गए तो मैंने उन्हें इशारा किया और वो चली गईं। जो लड़कियां मतलब नज़म पढ़ रही थी वो इशारा करने पे, हज़रत आयशा के इशारा करने के बाद चली गई। Narrated, Aisha, Allah's apostle, peace be upon him, came to my house while two girls were singing beside me the song of Boaz, a story about the war between the two tribes of the Ansar, the Hazraj and the Aus, before Islam. The Prophet, peace be upon him, laid down and turned his face to the other side. Then Abu Bakr came and spoke to me harshly, saying, musical instruments of Satan near the Prophet, peace be upon him. Allah's apostle, peace be upon him, turned his face towards him and said, leave him. When Abu Bakr became inattentive, I signaled to those girls to go out and they left. So this is Hadith number 949. इसके बाद अगली हदीस ये है कि
اور یہ عید کا دن تھا اور حبشہ کے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے بنو ارفدہ، یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ اس حدیث کو انگلش میں نریٹ کرتے ہیں۔ Narrated, it was the day of the Eid and the black people were playing with shields and spears. So either I requested the Prophet, peace be upon him, or he asked me whether I would like to see the display. I replied in the affirmative. Then the Prophet, peace be upon him, made me stand behind him, and my cheek was touching his cheek, and he was saying, carry on, O Banu Arfida, till I got tired. The Prophet, peace be upon him, asked me, are you satisfied? Is that sufficient for you? I replied in the affirmative, and he told me to leave. So this is Hadith number 950. اس کے بعد ہم نیکسٹ حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اگلی حدیث یہ ہے کہ حدیث نمبر 951 کہ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہیں زبیر بن حارث نے بیان خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن یعنی کہ عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اسی طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا، یعنی کہ پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی۔ Narrated Al-Bara, I hear the Prophet, peace be upon him, delivering a khutbah, saying the first thing to be done on this day, first day of Eid al-Adha, is to pray. And after returning from the prayer, we slaughter our sacrifices in the name of Allah. And whoever does so, he acted according to our sunnah tradition. So this is Hadith number 951. اس کے بعد ہم اس حدیث کے بعد نیکسٹ حدیث کی جانب پڑھتے ہیں۔ تو اگلی حدیث یہ ہے کہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھی جو انصار نے باس کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 952، اور اسی وجہ سے شاید ترکی کے یہ ڈراموں میں بھی ہمیں یہ تھوڑا سا وہ نظمیں پڑھتے ہوئے وہ دکھایا جاتا ہے۔ Narrated عائشہ، Abu Bakr came to my house while 2 small Ansari girls were singing beside me the stories of Ansar concerning the day of Boaz, and they were not singers. Abu Bakr said protestingly, musical instruments of Satan in the house of Allah's apostle. It happened on the Eid day, and Allah's apostle said, O Abu Bakr, there is a need for every nation, and this is our Eid. So this is hadith number 952. اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے کہ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی کہ ہمیں حشیم بن بشیر نے خبر دی، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ تا قدد کھجوریں کھاتے تھے، یعنی کہ 1، 3 یا 5
तादाद में वो खजूरें ईद के पहले वो खाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Narrated Anas bin Malik, Allah's apostle never proceeded for the prayer on the day of Eid al-Fitr unless he had eaten some dates. Anas also narrated the Prophet used to eat odd number of dates, like 1, 3 or 5 before the Eid prayer in the Eid al-Fitr. So this is Hadith number 953. इसके बाद next hadith है कि हमसे मुसद्दद बिन मसरद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलिया ने अयूब सख्तियानी से, उन्होंने मोहम्मद बिन सीरीन से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज से पहले कुर्बानी कर दे उसे दोबारा करनी चाहिए। इस पर एक शख्स अबू बर्दा ने खड़े होकर कहा कि ये ऐसा दिन है जिसमें गोश्त की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, और इसने अपने पड़ोसियों की तंगी का हाल बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सच्चा समझा। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास 1 साल की पठिया है जो गोश्त की 2 बकरियों से भी ज़्यादा मुझे प्यारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस पर इजाज़त दे दी कि वही कुर्बानी करे। अब मुझे मालूम नहीं कि ये इजाज़त दूसरों के लिए भी है या नहीं। तो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे उसको तो इजाज़त दे दी, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये बाकियों के लिए भी ये इजाज़त है या नहीं। Narrated Anas, the Prophet said, whoever slaughtered before the Eid prayer should slaughter again. A man stood up and said, this is the day on which one has desire for meat, and he mentioned something about his neighbors. It seemed that the Prophet believed him. Then the same man added, I have a young she-goat which is dearer to me than the meat of 2 sheep. The Prophet permitted him to slaughter it as a sacrifice. I do not know whether that permission was valid only for him or for others as well. So this is Hadith number 954, और यहीं पे हम आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में हमने तकरीबन 7 अहादीस को कवर किया है, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।